Alright, found a good trail. Now let's enter the jungle. A very good morning all of you. It's a beautiful morning here. तो टाइम अभी हो गया है फ़िलहाल 5:15 एंड आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट एडवेंचर. सो यहाँ से ज्वाइन करेंगे हमें एक और राइडर. क्या हाँ तो आपको घूम के आना पड़ा क्या? घूम के आना पड़ा? नहीं जाने में दिक्कत आएगी. जाने में दिक्कत आएगी. चले. Alright, all set. Approximate coordinates डाल दिए हैं मैंने मैप पे. Now let's go. सो द जंगल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. यहाँ से राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में फॉरेस्ट एरिया है. अब मैं कोई ऐसा ट्रेल या ऐसा रास्ता ढूंढ रहा हूँ जहाँ से अंदर एंटर कर सकें. बेसिकली अपन फॉरेस्ट के अंदर जा सकें. आई थिंक आई फाउंड वन. ये ट्रेल काफ़ी ठीक लग रहा है. यहाँ से अंदर करते हैं एंटर. लेट्स एंटर फ्रॉम एयर. देखते हैं आगे खुला मिलता है कि नहीं. अभी फ़िलहाल तो ठीक ठाक लग रहा है. अभी चलते हैं आगे. ये थोड़ा ओपन एरिया है. यहाँ रोक लेते हैं एक बार और मैं चारों तरफ एक बार पैदल घूम के देख लेता हूँ. हेलो एंड सलाम ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू दी चैनल. और आज हम आए हैं एक राइड पे. दिस इज़ बेसिकली ए रैकी राइड. सो कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है. एक ट्रेल है और एक रूट है और एक लोकेशन है. उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. और आई एम राइडिंग विद मोहसिन भाई टुडे एंड ही इज़ राइडिंग ऑन हिज हीरो Xpulse 200. तो अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं लोकेशन पे. आप देख सकते हैं चारों तरफ फॉरेस्ट है. बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है. दिस इज़ नियर जयसिंहपुरा. और अभी यहाँ से जो छोटे छोटे ट्रेल्स निकल रहे हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं. आगे देखते हैं कुछ अच्छी प्लेस मिलेगी तो आपको दिखाते हैं. लेट्स सी. लेट्स रोल. Alright, found a good trail. Now let's enter the jungle.
Let's go. वी आर गोइंग डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, तो बीच बीच में काफ़ी खुला एरिया आ रहा है, फिर उसके बाद फिर डेंस हो जाता है, बट इट्स गुड एंड फन टू राइड स्लो एंड स्टडी. That was too much fun here. Now we are back on the roads. ये ट्रेल थोड़ा जमा हुआ था बेसिकली, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इस वजह से जो सॉइल थी वो काफ़ी टाइट थी. अब आई एम लुकिंग फॉर ए लूज ट्रेल, मतलब थोड़ा सा सॉइल लूज हो. आई थिंक आई फाउंड वन. नाउ लेट्स एंटर दिस वन. ये शायद फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, सॉइल काफ़ी ज़्यादा लूज़ लग रहा है इधर. ऑलराइट, सो आई थिंक आज के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई. अभी फ़िलहाल अपन चलते हैं टूवर्ड्स नेवता लेक. यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर्स है नेवता लेक, और रूट जो है वो पूरा विलेज में से होके निकलता है, तो आई थिंक इट विल बी फन. लेट्स सी, लेट्स गो. सो आई एम एट नेवता लेक, और
एज यू कैन सी बिहाइंड मी दिस इज़ द नेवता लेक। अभी वहाँ से गांव के अंदर से होते हुए आए टूवर्ड्स द लेक, और अर्ली मानसून की वजह से काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी पानी देखने को मिल रहा है इस बार। बाकी मैं लास्ट टाइम आया था, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, तो पूरा लेक था जो ड्राइड था, लेकिन अभी काफ़ी ग्रीनरी है और बहुत ही सारा पानी भरा हुआ है। लेट्स सी, अभी यहाँ से देखते हैं, आगे चलते हैं और कुछ होता है तो आपको दिखाते हैं। और बेसिकली आज कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए था नहीं, दिस वॉज ए ट्रैकी राइड, तो मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए और नई प्लेसेस निकालने के लिए थोड़ी सी रैकी करनी पड़ती है, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। जो फाइनल वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हैं वो फाइनल नहीं होती, उनसे पहले कई बार, एक दो बार विजिट करना पड़ता है। सो दिस वाज द रैकी फॉर द So this is it from this video and let's end the vlog here। अभी यहाँ से वापस चलते हैं towards the main road। एंड यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, एंड मैं ऐसी और जगह एक्सप्लोर करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको कुछ नया देखने या जानने को मिला होगा।